और स्टैंडर्ड टूल में ये रहा ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 है। उसके आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी है, उसमें क्लिक करेंगे तो उसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, जूनागढ़, राजकोट, बड़ौदा, सोमनाथ ये ऐड किया गया। इस प्रोग्राम को रन करना चाहूंगा। ओके, ये प्रोग्राम रन हो रहा है और आपके सामने रन हो गया। तो वहां जितने सिटी थे वो सब यहाँ पे आ गए। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय काउंट? टोटल 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये लेबल है, लेबल में आंसर दिखा है, एड स्टैटिक सिटी एडेड। सोमनाथ के बाद सापुतारा ऐड हुआ है। काउंट अब वो 7 हो गया, बिकॉज पहले 6 था, अब एक सापुतारा नाम का सिटी ऐड हो गया तो वो 7 हुआ। सिलेक्टेड टेक्स्ट अहमदाबाद है। मान लीजिए कि बड़ौदा सिलेक्ट करके सिलेक्टेड टेक्स्ट करता हूं तो बड़ौदा आ गया। सो वॉट एवर द डेटा दैट यू सिलेक्ट, राजकोट, राजकोट इज दैट। सिलेक्टेड वैल्यू ये भी वही है। Selected text and selected value are almost same. गांधीनगर आया selected text and selected value. Prompt. Okay, sorry, वो अभी हमको नहीं लेना है। Selected index ये 1 कैसे आया? अहमदाबाद 0 पे, गांधीनगर 1 पे, जूनागढ़ 3 पे। तो अभी मैं जूनागढ़ सिलेक्ट कर रहा हूँ। Selected index देखिए 2 आया, क्योंकि हमारे लिए जो 3 है वो ऊपर 0 1 2 3 4 5 सोमनाथ सिलेक्ट किया और इंडेक्स में गया 5। क्लियर आइटम से सब आइटम क्लियर हो जाएगा। ओके, अब डायनेमिक एडिंग देख लीजिए। अभी मैंने यहाँ पे एक सिटी ऐड करना है, दैट इज अमरेली। I'm adding dynamic city from text box to this drop down list box. क्लिक किया, यहाँ से ये क्लियर हुआ और आप देख लीजिए अमरेली यहाँ पे आ गया। काउंट देख लीजिए 8 हो गया, पहले 6 था। फिर सापुतारा हमने स्टैटिकली ऐड किया, क्योंकि आप पहले देख ही लिए सोमनाथ था, सापुतारा, अमरेली मैंने डायनेमिकली ऐड किया। ओके, अभी ये प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या है? जस्ट मैं क्लिक करूंगा एंटर योर सिटी में और भरूच, क्लिक ऑन भरूच, हेलो भरूच ये आया है, बट भरूच यहाँ ऐड नहीं हुआ है। दिस इज an assignment practical task that you people will solve this. If I enter runtime any prompt box, this is a prompt box, localhost, enter your city name and Anjar, हेलो अंजार, ये अलर्ट बॉक्स है, वो प्रॉम्प्ट बॉक्स है, बट दैट इज नॉट एडिंग। व्हाई, हाउ, दैट इज योर पार्ट। नाउ वी अंडरस्टैंड। ओके, क्लियर आइटम्स देख लेते हैं ताकि ऑल दैट थिंग्स क्लियर आइटम, ऑल आइटम्स क्लियर। You can see that when there is no item. If I click on add, Saputara add, count 1. If I go there, AHMEDABAD Ahmedabad dynamic add, you can see that one Ahmedabad added. When we count it, it is 2. Selected text, it is Saputara. If I select Ahmedabad and selected text, then Ahmedabad. If I select Saputara and selected value, it is Saputara. इंडेक्स में सापुतारा 0, अहमदाबाद 1। डायनेमिक ऐड देख लिया, अभी हम बाद में बात देखेंगे, अभी इसका कोडिंग समझते हैं। सो फाइन, व्हेन आई स्टॉप एग्जीक्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक डेटा वैल्यू कैन बी एडेड बाय द आइटम्स प्रॉपर्टी। लास्ट इज सोमनाथ, आई एम एडिंग वन मोर and the text is Surat. Okay, run and you can see that one. सोमनाथ के बाद सूरत अभी दिखेगा।
हेरा सोनीपत के बाद सूरत. So statically by the property, how you can add the items, properties, collections, and by this you can. Now you understand one by one all the buttons are there. So I double click on this add button. This is design view. This is source view. Button 1 add, or I just double click on it. Drop down list 1 dot items dot add Saputara static data adding, and in label 1 static city added. You can see that this is label 1. Background color blue, fore color white, and this is label 1. So when I double click on it, drop down list box 1 dot items dot add Saputara. That Saputara was added as a statically data. In a label, it will display the information static city added. Now I click on this count, label 1 dot text equal to and label 1 dot text equal to drop down list 1 dot items dot count dot to string, and C# है तो semicolon आएगा. So the thing is ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में जितनी आइटम्स है एज अ टेक्स्ट वो एज अ काउंट होके स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके लेबल में दिख जाएगी. सिलेक्टेड टेक्स्ट label 1 dot text equal to drop down list box 1 dot selected item dot to text means whatever the drop down list box sitting in you select, it will convert into the text selected item as text, and it will show to the label 1. So this is a thing. Then selected value. The benefit is that if you use selected value, do not use dot text sub property. Look, this is a very easy to understand. This is drop down list box 1. Yes. This is a main property, selected item. Dot text means it will convert into the string and it will go there. So selected item is a property and dot text is a sub property. If you can observe this thing, drop down list 1 dot selected value, that's it. So directly we can use this thing. Selected value and selected text is same. Now index. Drop down list 1, shit. Drop down list 1, label 1 dot text as output. Drop down list 1 dot selected index dot to string. Because index value is always in numeric. It should be converted into the string, then the label will accept it. So drop down list box के अंदर हमने देखा था. If we select Saputara, then 0. It always start with 0. Whatever the things is 1 for us, हमारे लिए जो 1 है वो उसके लिए 0. Error जैसा काम, C language के error जैसा. Okay. All item clear. बहुत simple है. Drop down list 1 dot items dot clear. Finish. And label 1 के अंदर ये आया all items cleared. So that instruction will print dynamic array. This is really very nice. Drop down list 1 dot items dot add into the bracket text box 1 dot text means text box 1 में जो भी data item डाली जाएगी वो drop down list box 1 में चली जाएगी. फिर text box 1 को clear कर दिया. Clear नाम की मेथड आपको VB.NET में मिलती थी. यहाँ पे आप देखिए clear है ही नहीं. There is no clear. So what I did it, this is text equal to finish as this. So this is about it. So now understand the prompt. It is very important. If I double click on prompt, it will go to the function of script, JavaScript function show. I go to design, I go to prompt, I go to source, button 8, value prompt
On click show. So when I click on it, it will go to the show, and very sure it is show function. स्क्रिप्ट फंक्शन स्टार्ट हुआ है, देखिए आप, स्क्रिप्ट टैग जावास्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, फंक्शन का नाम शो, वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए भी है PROMP फ्रॉम एंटर योर सिटी नेम। ओके, समझिए बहुत अच्छी तरह से। यदि नेम खाली नहीं है, नॉट इक्वल टू का यूज किया, अलर्ट हेलो, सिटी नेम में हमने जो भी डाला, बचाओ, भरूच, अंजार, हेलो अंजार, ये जो है वो कोशिश करी जा रही थी। सो मैंने अभी वो रिमूव किया। नाउ व्हाट यू रिक्वायर्ड, जो भी डेटा यहाँ प्रॉम्प्ट में आ रहा है जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल में, जैसे हमने बचाओ डाला, अंजार डाला, अम्ब्रेली डाला, वो सब नेम में जो आ रहा है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स 1.items.add के द्वारा चला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस एग्जांपल से डेटा डायनेमिक एंटर बाय prompt box, data dynamic display by alert box। फंक्शन बटन ऑन क्लिक का जरूरत नहीं है, एक बार रन कर देते हैं। प्रॉम्प्ट समझिए कोड को, शो नाम के फंक्शन में, जावास्क्रिप्ट के अंदर शो नाम के फंक्शन में वो गया और एंटर योर सिटी, महसाना, हेलो महसाना, अलर्ट बॉक्स में आया, मैसेज बॉक्स में आया, इसको अलर्ट कहा जाता है, यह है। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स का एक प्रचलित यूज जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सिलेक्ट योर कंट्री। If I select India, look, this is drop down list box 2, this is empty. But if I select India, Gujarat, Mumbai, Rajasthan. Okay. If I select US, California and New York. If I select Australia, then Melbourne and Sydney. These are the state of Australia. And if I will go for US, then California, New York is there. The next part of this combo box is select your district. Suppose if you select India, then after you select Gujarat, then here in third drop down list box, you can see Ahmedabad, Gandhinagar, Rajkot, Junagadh, Surendranagar, Surat, Bharuch. These are the districts. Okay. If I select Mumbai, then Aurangabad, Pune. Okay, so this is a drop down list where you can see that one in items, nothing. So where it is, when I double click on it, so in page load event, we add the data, select your country, India, US, Canada, Australia. And this is a code, ISPOSTBACK, only one time it will run. If you cannot understand, please kindly see the comment. It can stop to add dynamically runtime loop-based item add, means only one time it will perform. So in front of you, I make a comment for this, and comment for this.
Now I would like to run this. When page will load, my drop down list box items will added into that part. So in page load event, you can find it out all that things. Suppose I select India. Okay. But you can see that when I select India, US, Canada, Australia. Again, it is loop based adding. Select India, US, Canada, Australia. Suppose now I click on US. US states are there, but you can see that 3 times. This 1, 2, 3. So please kindly understand. This is if not is postback, it can stop at dynamic runtime loop based item and add only one time performance. So this is very important. Now, how if I select India, then Gujarat and all that things come dynamically, how it is possible? So this is auto postback property and I make true. So if I make it false, what happens next? Let me understand. Then after we will understand code also. I select India, nothing. I select US, nothing. I select Australia, nothing. So what is the reason behind it? Auto postback property will use dynamically response to all the tool. So if I make true and then I will execute. And when I will execute, you can see this. When I select India, yes. Canada, yes. Australia, Melbourne is there. So auto postback property must be true. Must be. Now, this is drop-down list box 2. And in drop-down list box 2, select index change event is there. So I double click on it. If drop-down list box 2 equal to India, then 3 all item will clear and add Gujarat, Mumbai and Rajasthan only. If else if structure ladder we completed in combo box, my dear students and friends. So this is the same thing I use. If you select India and drop down list box 2, then drop down list box 3, all previous item will clear, then Gujarat, Mumbai, Rajasthan will add. Okay, else if you select US in drop down list box 2, then in drop down list box 3, all item will clear, California and New York will dynamically add it in drop down list box 3. Same. If you select Canada, then this condition will false. Yes. This condition will false. Yes. This condition will true. Yes. Drop down list box 3, items clear, Toronto and Oriental will added. This is Canada states. Last, if you select Australia, then it will execute this condition. All item will be clear, Melbourne and Sydney. And if you select not India, US, Canada, and Australia, of course, you select only this. And if you select this, then drop down list box 3 dot items clear. The task and the challenge that I'm giving to semester 5 and B and 5E division is that here I select India. If I select Rajasthan, then next combo box should show me Udaipur, Mount Abu, Jaipur, Ranthambore. Suppose I select Gujarat, then next combo box will show me Ahmedabad, Gandhinagar, Surat, Porbandar. So thank you so much to understand auto postback property is postback property.